अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमने चैप्टर 9 स्टार्ट करना है, जनरल एंड ट्रांजिशन प्रोविजंस। 201 है द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 कम इनटू फोर्स ऑन। ये यहाँ गलत टाइप हो गया, इसकी जो ओरिजिनल डेट बनती है वो 23 सितंबर 1887 है। प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। द एक्ट अप्लाइज ये होल ऑफ पंजाब। लैंडलॉर्ड का भी आपको पता है, ओनर और पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट। अच्छा, ये मैं जल्दी जल्दी करूँगा, कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आपको ये 100 MCQs में दे दूँ। तो टेनेंट इंक्लूड ऑप्शन ए। या आप साथ बुक ओपन करके बैठ रहे हैं कि जो आपकी हार्ड फॉर्म में आपके पास एक्ट है ना, तो उसको अंडरलाइन करते रहें कि इस सेक्शन में या इस चैप्टर में वो MCQs कैसे बना रहा है, कि इसमें MCQs कैसे बन सकता है सेक्शन में। इससे आपके लिए आसानी रहेगी और रिवीजन भी आपकी इजीली होगी और ज़्यादा होगी, टाइम भी बचेगा क्योंकि टाइम बड़ा हुआ कम है। हफ्ते को और इतवार को पेपर है। अच्छा, 206 134 डिफाइंस रेंट एज। ये ऑप्शन ए। 207 है, ऑप्शन ए ट्रेस्पेसर। सेक्शन 135 ऑप्शन ए कस्टमरी राइट्स नॉट inconsistent with act। 209 the authority to interpret acts provision rests with option A financial commissioner। Section 136 empowers the government to frame rules and order. Rules making power under act is exercised by provincial government. Rules must be consistent with provisions of the act। Section 137 provides that forms prescribed shall be published in official gazette। Repealed हो गया है only पंजाब रेंट एक्ट एंड सिमिलर लॉ ओल्ड। ये 215 है, ये आप खुद पढ़ें। 216 Section 139 ensures continuity of appointment of revenue officers under old law। 144 Section permits use of forms prescribed under repealed law until new one framed। Section 141 authorizes government to remove difficulty in implementation। Section 142 permits delegation of power to financial commissioner, collector and officer। 133 ensure that rules framed are led before provincial legislature। Act remain balanced between rights of landlord and tenant। Section 144 declares that act done in contravention are void। Revenue officer acting beyond authority are personally liable। 145 state that rule made under the act have same force as law। Section 146 empower government to amend schedule by notification। Chapter 9 है schedule and procedural provisions है। Schedule attached to act mainly provide classification of suits and application। 227 है schedule 1 of the act specify nature of suit to be tried। ये इतना important नहीं है। Suits for recovery of arrears of rent fall under assistant collector of the first grade। Application for compensation for improvement are decided by revenue officer। Appeal from the decision of an assistant collector of first grade lies to collector। Appeal from decision of the collector lies to financial commissioner। Schedule 2 Act generally deals with appeal and application। Revenue officer decree is executed as decree of civil court। The final authority under the Punjab Tenancy Act is financial commissioner। The Act ensures protection of tenants' rights through statutory occupancy and fair rent। Occupancy tenant is primarily protected against all of these। Revenue court operate under supervision of financial commissioner। Section headings in the Act indicate subject matter, ये इतना important नहीं है। Section 2939 when the Act refers to collector, it includes all subordinate officer exercising power। अच्छा, 240 है, ये भी आप खुद पढ़ें। इसी वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100 MCQs करवा दूँ ताकि आपको भी टाइम बचे। 241 अपील अंडर द एक्ट जनरली लाइज विद इन 30 days। 242 a tenant aggrieved by unlawful rent increase should
apply revenue officer. An occupancy tenant's rights are heritable. Occupancy rights extinguished if all of these. Rent in kind means payment through share of produce. When crops are divided, both parties must be present at the VN. If rent is unpaid, landlord must file suit in revenue court option A. अच्छा 248 है the Punjab Tenancy Act treats all agriculture dispute as revenue matter. 249 the act separates revenue and civil jurisdiction. 250 है tenancy rights in Punjab are governed by Punjab Tenancy Act. Chapter 10 है ये practical application and interpretation MCQs है which authority has the power to हेयर टेनेंसी अपील फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल कमिश्नर ये कमिश्नर ही होगा कलेक्टर भी जैसे हम कहते हैं इसमें वर्ड वो बार बार फाइनेंशियल कमिश्नर का वर्ड यूज़ कर रहा है ये एक ही चीज़ है डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर फाइनेंशियल कमिश्नर विच सेक्शन बार सिविल जुरिडिक्शन ओवर टेनेंसी डिस्प्यूट 87 section which officer is lowest grade assistant collector second grade mainly deals with agriculture tenancies. A subtenant without consent of landlord is unauthorized. Occupancy right can arise by continuous possession and payment of ejectment of tenant can be ordered by revenue court only. Rent in money is also called cash rent. 259 a limitation 30 days ये बार बार repeat हो रहा है. Right of occupancy mean tenant's heritable permanent possession. If tenant default in rent but pay before decree, he cannot be ejected. The expression revenue officer include collector and assistant collector. Improvement made without notice to landlord is non-compensable. A tenant can surrender tenancy by written notice and landlord acceptance. The act primarily applies to agricultural land only. ये 266 रेवेन्यू कोड का मतलब ये भी आपको पता है compensation for improvement is payable by landlord takes possession. Section 18 relates to time to rent payment. Revenue appeals lie in hierarchy. ये उसकी वो बताई हुई है hierarchy मतलब कि सबसे पहले असिस्टेंट कलेक्टर कलेक्टर कमिश्नर रेंट इन्वेस्टमेंट इज वैलिड ओनली ऑप्शन ए एमिशन ऑफ रेंट मीन ये भी डेफिनेशंस के आगे हैं डिफरेंट dispute between co-tenant over rent is decided by revenue officer. Occupancy right is lost if tenant अच्छा all of these है ये इतना इम्पोर्टेंट ये रूल बताया अच्छा चैप्टर 11 है comprehensive practical application MCQs 276 landlord and agriculture relation 277 act aims to protect tenant 278 revenue officer ये मैं ऐसे ऐसे करके स्लाइड ऊपर करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो इसलिए आप ये नोट कर लेना अपने साथ साथ